मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूँ बचपन से. I do not like that party. I have a strong dislike. Why? And I believe that कांग्रेस इस देश में जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, इसका जड़ कांग्रेस है. राहुल से इस गुजरात मॉडल बेकार है. रेवंत रेड्डी से इस गुजरात मॉडल शानदार है. हम भी तेलंगाना को उसी रास्ते पर ले जाएंगे. राहुल से इस लिकर स्कैम हुआ नहीं. अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है. रेवंत से इस लिकर स्कैम हुआ है. केसीआर को बेटी कविता को अरेस्ट करना सही है. किन के नक्शे कदमों पे चल रहा है? राहुल जी के या मोदी जी के? उनका बस रवैया साफ है. या तो आप हमारे जेब में रहो या जेल में रहो. लिकर पॉलिसी में अगर आज तक कहीं 1 रुपया बरामद हुआ तो मुझे बता दें. 2 साल से कार्रवाई चल रही है. काफ़ी सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल, कविता जी, सिसोदिया. एक प्राइम मिनिस्टर अगर इफ ही हैज टू इंडल्ज इन प्राइमोडियल रेटोरिक, it shows that the man is desperate and that he is losing. If he has to indulge in rhetoric to polarize votes on religious lines, if he has to talk about Aurangzeb, if he has to invoke Mangal Sutra, if he has to invoke primordial issues like Muslims having more children, that means the man is desperate and he's losing. He's on a sticky wicket. 5 trillion economy, 10 trillion economy, all of these will happen despite no government. Are you part of that No, kind of unsaid coalition to keep the BJP out? मैं उत्तर के बारे में तो कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता नहीं, जानकारी भी ज़्यादा नहीं है उत्तर भारत में क्या हो रहा है. It's a different country altogether. If you ask me, it's a different world. Seriously, you're saying Yeah, North is a different country? I'm not saying literally, but it's practically a different country. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Hyderabad, Telangana. My guest today is KT Ramarao, or KTR as he's popularly known as. Former Telangana Minister, Working President Bharatiya Rashtra Samiti, son of former Chief Minister of Telangana, popularly known as KCR. Now in the opposition after the Congress won the state election. The BRS party of KCR is not part of the India alliance, though they lean non-BJP. The party is facing serious corruption allegations. Telangana is the youngest state in India after being separated from Andhra Pradesh in 2014. Crucial in the formation of the state was KTR's father, KCR, who was hardly seen mingling with the crowds when in power, but now is working the electorate. The BRS was ousted from power 6 months ago. The general election in Telangana will be held in a single phase on May 13th. KTRji, thank you so much for being part of the podcast. Thank you, Smita ji. I'm looking forward to having a one-on-one conversation. We've been part of TV debates where you are in one dabba and I'm in one dabba and we have the conversation. So this time it's going to be a one-on-one, so I'm looking forward to it. Telangana going to polls on the 13th. Out of the 17 Lok Sabha seats, how many do you expect to win, that is BRS? In 2014, after the first, in the first election after the formation of the state, we had won 11. And then in 2018, we were hoping for an encore, but we ended up falling short by 2, so we won 9. This time, I'm hoping it'll be a better score, probably somewhere between 9 to 12. That's very optimistic, no? After having just lost the state election 6 months back, for you to think that you're bouncing back? Why not? Because, in 4.5 months, the Congress party, which basically promised the moon to the people of Telangana to deliver all of that in 100 days, and after 150 days, they could not deliver even one. तो मुझे तो लगता है कि जब लोग निराश हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि alignment of expectations versus reality अगर गलत हो गया, उनका अंदाज़ा गलत हो गया, तो गुस्सा भी उतना ही तेज़ आता है. पर इतनी जल्दी disillusionment होगा क्या? There's no honeymoon period for the Congress government? मैं ये मान के चलता हूँ मैम कि अगर 88 सीट जीतने के बाद पिछले इलेक्शन में TRS out of 119 असेंबली में, अगर 3 महीने में if we are going to lose about 8 Lok Sabha seats, then the same thing is possible with Congress, same thing is possible exactly in the same state. About 5 years ago, the same situation happened. Now I think it's our turn to reverse and turn the tables. Is it a triangular contest? Because there are some write-ups which say that it is a triangular contest, but Revanth Reddy is accusing the BRS and the BJP of having some secret understanding. Well, Revanth Reddy, Rahul Gandhi, their modus operandi has been very, very simple. They have tried to, build this narrative time and again. They have done this
partially successfully during assembly. Now they're trying it again. But the fact is, ma'am, today if you look around the country, I think it is the strong regional leaders that have been able to checkmate the growth of BJP in the country. For instance, in 2014 and 18, both times, when Prime Minister Modi won the election in Delhi, it was the TRS which was able to hold off BJP's advancements in Telangana. It was not the Congress which was able to stop that growth. Likewise, in 2023 assembly elections, all the stalwarts of BJP in Telangana have been trounced by BRS, not Congress. The fact is, if you look around the country, it is a Mamata Banerjee who's been able to actually offer some resistance in Bengal. It is a Stalin who's been able to offer some resistance in Chennai. It is a Kejriwal who's able to offer some resistance in Delhi and Punjab. And it is a KCR who's able to offer some resistance in Telangana. So, if you look around the country, Congress is not in a position to actually checkmate or even challenge the BJP. In fact, let me take this argument one step further. आप अगर एक बार याद करेंगी, कोशिशें तो हर जगह की गई सरकारों को गिराने की. हमारे यहाँ की गई. हमारे 4 MLAs को खरीदने की कोशिश की बीजेपी ने, हमने उनको रोक लिया, केस भी फाइल कर लिया. बाकी जगह भी काफ़ी कोशिशें हुई. बट जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो कामयाब हो गए, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे कर्नाटक, even in Goa, for example. So my only point, limited point is that Congress by itself is not in a position to challenge BJP. So therefore, every state they come out with this narrative. वो जाते हैं उड़ीसा बोलते हैं कि बीजू जनता दल बीजेपी के साथ हैं, कहीं और जाते हैं और बोलते हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं. अपने आप में जब कोई आदमी नाकाम हो जाता है, जैसे मैं राहुल गांधी जी की अगर बात करूं, वो खुद अमेठी से नहीं लड़ पाते हैं. अब वो आके यहाँ पे तेलंगाना में कहीं और उपदेश देंगे और ये कहने लगेंगे कि ये बीजेपी के साथ ये नहीं है. अगर ये मैं चार्ज लगाऊं उन पे कि भाई आप यूपी में इसीलिए नहीं लड़ रहे हो क्योंकि आपका कोई समझौता है बीजेपी के साथ, ये कोई मतलब होगा इसमें? तो जहाँ जहाँ कांग्रेस अपने बल पे नहीं लड़ पाती है, जहाँ जहाँ कांग्रेस अपने बल पे नहीं जीत पाती है, वहाँ ये चार्जेस लगाती हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है. बट इन द पास्ट I'd say about 2 weeks, if we were to see the first phase and the second phase, इन दोनों phases में principal opposition जो है वो कांग्रेस रही है. कांग्रेस has been taking on the BJP, taking on the narrative. थोड़ा बहुत DMK ने किया, but otherwise you hardly seeing anything from the regional parties. Ma'am, you have to, unfortunately, I think what happens across the country is, people, especially those, and with all due respect to people who are from Bombay and Delhi, लगता है कि but having said that, but ये है कि वास्तव में एक्चुअल मुकाबला, एक्चुअल लड़ाई रीजनल फोर्सेस ही कर रही हैं. आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कांग्रेस का. जहाँ जहाँ कांग्रेस ने उनके साथ मुकाबला की, वहाँ वहाँ कांग्रेस की हार हुई है बीजेपी के साथ. स्ट्रेट जहाँ फाइट होता है कांग्रेस नहीं जीत पाती. But almost in 100 seats they are 1-to-1 fight. That's the problem. In fact, that's the bane of the opposition. मैं तो इस हद तक कहता हूँ, अगर आज इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मोदी जी का, वो है राहुल गांधी और कांग्रेस. क्योंकि जब तक राहुल वहाँ पे है, मोदी जी महफूज है कुछ हद तक. जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी, स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज हैं, वहाँ मोदी जी और बीजेपी की ग्रोथ को हम लोग रोक पा रहे हैं. जहाँ जहाँ कांग्रेस है कुछ नहीं कर पाती. आप देख लीजिएगा, आज अगर आप जहाँ कांग्रेस अगर सत्ता में भी है, जैसे तेलंगाना, 17 सीटों में से अगर आप एक बार छानबीन कर लीजिए, आपके रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, लोकल लीडरों से बात कर लीजिए, you will see a lot of tacit local level understanding, which is, it is very, very difficult for somebody from Delhi to understand and decipher. So what would you have expected Rahul Gandhi to do? Can he tell a Revant Reddy कि आप साइड में हो जाइए, BRS को आगे आने दीजिए? फिर कैसे कर सकते हैं? Absolutely not. राहुल गांधी को ये करना चाहिए कि भारत जोड़ो करके जब चलते हैं, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जब इलेक्शन होता है, वहाँ जाना होगा. आप राइट ले लेके वहाँ गुजरात को छोड़ के अगर आप दिल्ली चले जाएंगे तो आप कहाँ के लीडर हो? दूसरी बात, जो आपका क्षेत्र है, जो आपकी फैमिली बैस्टियन थी, रायबरेली और अमेठी, आपका वहाँ से नहीं लड़ना, आपका वहाँ पे फोकस नहीं रहना. यूपी में जहाँ 80 सीट है, हिंदी हार्टलैंड, अगर आप नहीं जीतोगे तो कहाँ से जीतोगे आप हिंदुस्तान को? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस में वो फाइटिंग स्पिरिट रही नहीं. आज पूरे अगर अब आप जाते हो दिल्ली और कहते हो अरविंद केजरीवाल को ये वोट काट रहे हैं, आपको क्या लगता है देश के वोटों पे आपने ठेका ले रखा है?
आपको क्या लगता है कि जो भी एंटी बीजेपी वोट है आपको बराबर ही आपको ही मिलना है और किसी को नहीं मिलना है? आप में अगर क्षमता नहीं है लड़ने का, अगर आप में दम नहीं है आपके पार्टी में लड़ने का, तो आप किसी और को दोषी अगर आप ठहरा के अगर आप गुमराह करना चाहोगे, ये नहीं चलेगा, नामंजूर है। तो क्या इसीलिए आप इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने, कांग्रेस की वजह से? ना सिर्फ कांग्रेस ही मैम, आवर पार्टी फर्मली बिलीव्स, नॉट वंस बट वी हैव सेड दिस लॉट ऑफ टाइम्स, पिछले 75 साल में both parties, Congress and BJP, have been given enough opportunities by the people of this country. 55 years of Congress, nearly now 20 years of BJP. Now, if India is still languishing as a third world country, whether no matter what hype I would like to give, you would like to give, or anybody would like to give, कि हम लोग ये कर लिए वो कर लिए, yes, we are still a third world country. We are still a developing country, if I have to put it in a politically correct sense. Who is responsible for this? In 1989, both China and India were on the same plane. Both of us had similar sized economies. In the last 35 years, China is now a 6 times larger economy than We India. had 15 years of instability just because of those non-Congress or Congress-supported alliances of regional parties. You know, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे कर चलिए करके. आपकी बात मान लेते हैं, चलिए आपकी बात तो मान you लेते हैं. tell me, No, चलिए आपकी why बात मान would लेते I हैं. elect a government run by a conglomerate of regional parties and cause a coalition of regional parties who nobody knows कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा? चलिए आपकी बात मान लेते हैं, छोड़ देते हैं 15 साल, बाकी 60 साल, बाकी 60 साल. Congress. Let us talk about last 10 years. Why go that far? Let us talk about last 10 years. What all did Modi ji promise for this nation? He said, I'll double the farmers' income by 2022. He promised a 5 trillion economy by 2022. He promised कि हर आदमी को मैं घर दे दूंगा by 2022. He promised the moon, bullet trains will be running. अमेरिकन लोग आके यहाँ पे वीज़ा के लिए खड़े हो जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो वादा उन्होंने की, मैं 15 लाख की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, काला धन वापस लाने की 15 लाख की वो बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो खैर छोड़ दीजिए, वो जुमला था. तो बाकी जो प्रॉमिसेस इन्होंने की 2014 में 18 में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. अब लोग बोलेंगे कोविड आ गया, छुप जाएंगे. But madam, please verify what I'm saying, if I'm right or wrong. The entire world says that India is on an upward trajectory. Smita You ji. feel that that's wrong? I'll tell you what, that will happen despite Modi. Modi, no Modi. Okay, So now you're sounding let like me. Chidambaram ji. No, please, no Chidambaram. I'm not talking about Chidambaram. Let me complete. COVID से पहले 8 quarters, there was a severe slowdown. It is fortunate for Modi ji. That Modi COVID ji. happened? No, for Modi ji, not for the rest of the world. For Modi ji, because it has hidden his failures as a government, and it had given him a convenient posture कि 8 क्वार्टर की स्लोडाउन जो आके लॉकडाउन में लैंड कर गई, मोदी जी को एक बहाना मिल गया कि भाई कोविड आ गया इसलिए रुक गया. बात तो साफ है, 8 quarters of slowdown, continuous consecutive quarters of slowdown happened because of Modi's inept policies. Modi ji's inept economic policies have landed into this country into a disaster. So let me. So I'm not sounding like Chidambaram. All I'm saying is, 5 trillion economy, 10 trillion economy, all of these will happen despite no So government. then why not have Rahul Gandhi as Prime Minister? That's what I'm It's going saying. to do well anyway. Despite no government is what I'm saying. So you If don't. in your mind, Smita, if you So in your mind. Tell me, it's my only thing is that we are halfway through elections, or well, half of India has voted, even though only 2 phases have happened, and we are going into the 3rd phase. By the time we air this, it'll probably be towards the 4th phase. But anyway, everybody's mind is, अच्छा चलो ठीक है, मोदी जल्लाद, मोदी खराब, मोदी सब कुछ खराब. ये बीजेपी से खराब चीज है ही नहीं इस दुनिया में. ठीक है, ऑप्शन क्या है? आप ऑप्शन किसको बनाएंगे? The funniest part is. ना सीधा बताओ. ना सीधा बता, सीधा ही बता रहा हूँ. The funniest part is, people would like to create this as a contest between Modi and Rahul because it makes Modi look better. अच्छा, don't have Rahul ना, then who, Mamta? तो क्यों आपका मतलब मन सीधा राहुल पे क्यों जाता है? I'm asking because it's the largest single party after BJP, no? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 2004 में. नहीं, मेरे को नाम दो. नहीं, बता रहा हूँ मैं. First, who? I'm coming there. I'm coming. It's Modi or who? So Modi or कौन? Modi or who? It's Modi or Constitution of India. Simple. It is the Constitution of India that out there? Absolutely.
You'll rule by the book. Let me complete. Everybody rules by the book. You take oath. बिल्कुल नहीं. Sorry to disagree with you on this. No. We're not This being man ruled. wants his own constitution. This man wants to run this country by weaponizing institutions. It's a different story. Anyway, let me complete my point. हाँ. 2004 में, when India was shining, apparently, everybody said the same thing. If not Vajpayee, who? कौन चला पाएगा इस देश को? जब लोगों ने तय किया कि किसी और को लाना है, इनको छोड़ना है, बाहर निकाल फेंकना है, तो निकाल फेंकेंगे. मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात पे आप इंडियन इंटेलेक्ट को इतना इंसल्ट मत करो, इतना अंडर एस्टिमेट मत करो कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी भगवान है, मोदी जी बता रहे हैं इंडिया को, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने आपकी ज़िंदगी बचा ली वैक्सीन दे के. ये बकवास जो चलता है हिंदुस्तान में, मैं इसको बकवास मानता हूँ, क्योंकि इस आदमी को जो एक काम नहीं कर पाया ठीक से, इसको भगवान दिखा के, इफ़ नॉट मोदी हूँ, क्यों नहीं? There are so many talented, you want to think about 2004, no, right? 2014 से पहले मोदी कौन था? नहीं, 2004 is what you are bringing forward. That 2004, it was if not Vajpayee, who? You're drawing parallels. If not Vajpayee, who? And the country said we prefer the who rather than Correct. Vajpayee ji. So they said who. तो who का अब 2004 and 2024 में 20 साल गुजर चुके हैं. Do you think that Indians are ready to play that gamble again? What gamble? It's a gamble, no? Why not? They elected the same government again in 2009. Why is it a gamble if No. democracy has elected the same Hang on. government In again? 2004, nobody knew who the prime minister is going to be. Which is fine. That's parliamentary democracy. That's how it came. Smita, we are not in a presidential democracy. Okay. We are in a parliamentary democracy. We elect our MPs. But what I'm saying is India has changed, hasn't it? Sorry. India has No? changed, but Indian mindset now is being thought policed. Okay. कि मोदी presidential format है क्या? मोदी को वोट दे रहे हैं सीधा? नहीं Seems ना? like that, no? No, it doesn't. It seems like that to you, but it doesn't seem like When that to me. people are going in around, a parliamentary when democracy. journalists are going around and speaking to people, not many are saying that हम महंगाई पे वोट दे रहे हैं या इस पे वोट दे रहे हैं. इट इज़ लाइक महंगाई को हटाएगा कौन या फिर रोजगार देगा कौन. उसके लिए या तो दे विल वोट फॉर समाजवादी पार्टी और दे विल वोट फॉर DMK or they vote for Modi. They are voting for people. Whether you like it or not, people are not, they're seeing option कि ये deliverance किससे होगा. मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई एक आदमी को लेके इलेक्शन चल रहा है, अगर लगता है कि मोदी नहीं तो कौन या मोदी ही वापस आएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी ड्रिवन टू ईदर डिसलॉज वन पर्सन और it should not also be driven to basically make sure that one person returns. It should be driven on policies. It should be driven on the performance of the government. It should be driven on the agendas that are being set by various parties. So having said that, India is still, last time I checked, it's a parliamentary democracy. 543 Lok Sabha seat है, जिनमें अगर 272 जो पार करता है उनकी गवर्नमेंट बनेगी. तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि तेलंगाना में जो 17 सीट है, अगर इनमें हमने 10-12 निकाल ली, अगर 10-12 निकाल ली या ज़्यादा निकाल ली, तो कल कुछ भी हो सकता है. सो वाई वरी टू मच अबाउट मोदी जी नहीं तो कौन या ये नहीं तो कौन. बीजेपी वैसे अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, आर दे रेलेवेंट इन एवरी सिंगल स्टेट इन इंडिया? नो, देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स वेयर बीजेपी इज नॉन फैक्टर, नॉन एंटिटी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन फैक्ट दिस होल मिथ दैट इज बीइंग प्रोपेगेटेड कि 400 जीतेंगे. कंटेस्ट करिए बीजेपी कितने, 420. तो मैं क्या कह रहा हूँ, दिस प्रोपेगेंडा, दिस मिथ्स, दिस हाइप, दिस एग्जैजरेटेड हाइपरबोल दैट गेट्स क्रिएटेड कि 400 जीतेंगे, 350 जीतेंगे, उनमें क्या वास्तवता है? Quite a few of them are realizing that was probably that backfired on them. That's what some are thinking within the party. And let me also say one thing. It shows the desperation of a leader कि 10 साल हुकूमत चलाने के बाद, सरकार चलाने के बाद, एक प्राइम मिनिस्टर अगर if he has to indulge in primordial rhetoric, it shows that the man is desperate and that he is losing. If he has to indulge in rhetoric to polarize votes on religious lines, if he has to talk about Aurangzeb, if he has to invoke Mangal Sutra, if he has to invoke primordial issues like Muslims having more children, that means the man is desperate and he's losing. He's on a sticky wicket. So it shows that India is definitely not what Modi ji was hoping for. Indians are thinking differently, and maybe it is time for a change.
Okay, let me come to the state before we get into the larger issues. I want to get to this. Within 6 months, your attack, very sharp attack on the current chief minister, you called him Eknath Shinde, and you said that he's going to be moving close to the BJP. But in the past week, you're seeing very, very sharp attacks by Revant Reddy on the BJP, where it was on that, the fake video of Amit Shah. So are you still convinced that he's like going to be a Shinde? He will be part of the Operation Kamal soon? Ma'am, if you look at BJP's modus operandi, उनका बस रवैया साफ है, या तो आप हमारे जेब में रहो या जेल में रहो, सिंपल। या तो आप हमारे जेब में रहो या जेल में रहो। तो रेवंत रेड्डी जी पे काफ़ी सारे केसेस हैं, उनके काफ़ी सारे वीकनेसेस हैं। तो मैं बेचारे पे तरस खाता हूँ। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि उनके जो मतलब पब्लिक प्रोनाउंसमेंट्स हैं, उनके जो स्पीचेस हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 4-4.5 महीनों में उन्होंने क्या क्या कहा, विच आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट राहुल गांधी एंड कांग्रेस स्टैंड आर। फॉर इंस्टेंस, राहुल जी सेस चौकीदार चोर है, रेवंत जी सेस नहीं हमारे बड़े भाई हैं। राहुल जी सेस No, 5-6 years back he said Chokidar Chor. He's not repeated that now. I think Rahul still stands by it. If I understand politics correctly, Rahul still might not say it often, but I think he still stands by it. Rahul says Adani is a fraud. Revant says Adani is a friend. Rahul says Gujarat model बेकार है. Revant Reddy says Gujarat model शानदार है, हम भी तेलंगाना को उसी रास्ते पे ले जाएंगे. Rahul says liquor scam हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है. Revant says liquor scam हुआ है, केसीआर को बेटी कविता को अरेस्ट करना सही है। और आखिरी में आपकी अदालत में अगर एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर जाता है और वहाँ की युवा कहती हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे, तो आप कांग्रेस अगर चीफ मिनिस्टर हो तो क्या कहोगे आप? कम से कम ये तो कहो कि भाई देश खराब हो जाएगा, आप ना वोट दो। ये कहते हैं नहीं वोट दे दो मोदी जी को। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ स्मिता जी कि ये आदमी जो हैं किन के नक्शे कदमों पर चल रहा है, राहुल जी के या मोदी जी के? ये सवाल मेरे मन में नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के मन में है। इनके जो पुराने ताल्लुकात हैं, इनके जो पुराने रिश्ते हैं, वो एबीवीपी का आदमी था, आरएसएस का आदमी था रेवंत रेड्डी। तो जब प्राइम मिनिस्टर से भी जब पहली बार मिला, एक बायो जाता है ना उसका कौन आदमी मिल रहा है, उसमें भी लिखा था कि आदमी भारत जागृति का, वो क्या नाम है उसका, जागृति आरएसएस का जो छापती है ना वो मैगजीन, उसका प्रिंटिंग ये आदमी करता था। So that makes him an untouchable, so-called untouchable? No, that makes him basically being in cahoots with BJP is what I'm saying. A Congress chief minister towing the line of Prime Minister Modi and openly supporting every policy of Prime Minister Modi makes it look very suspicious कि आदमी कांग्रेस में टिकेगा कि नहीं। सीधी बात। But he's won from a Congress ticket. Yeah, he's won from TDP ticket and jumped into Congress without resigning. This man has used every single party. He was also in TRS, if you know the history. He was in ABVP, he was in TRS, then he joined TDP, then he joined Congress. Tomorrow where he will go, we'll talk in a few years. Okay, I'm going to come to the Kavita ji part, but before that, since you called him Shinde, now he's saying, he talks about your dad, and he says, and I'm quoting, seeing KCR, it feels as if Goebbels is born again. After his lies in Suryapet and Mehboob Nagar, he's trying his best to spread false information about the incidents related to Osmania University. Osmania University is in the state of Telangana, so for our expat viewers, you can just Google and see what the controversy is about. In May 2023, and I quote again, in May 2023, when KCR was Chief Minister, a similar notice was issued by the University Chief Warden regarding the summer vacations and closure of hotels from May 12th to June 5th, 2023. Also mentioned about shortage of electricity and water. KCR's bankrupt idea and propaganda is clear with his rhetoric that it is shut down only after the Congress comes to power. So you say Shinde, he says Goebbels. No, funny part is, I think your team should have done some more homework on this because he's now been thoroughly exposed. He actually tweeted a Farji document, a Farji letter. A chief minister put out a fake letter supposedly from KCR's government. Unfortunately, somebody modified it for him and he fell for it. I'm giving the guy a benefit of doubt कि गलबल आदमी है छोड़ो। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो आदमी फेक प्रोपागेंडा करके आज चीफ मिनिस्टर बन गया कि मैं 6 गारंटी अमल करूँगा, मैं हर किसी को 2 लाख का कर्जा माफ़ कर दूँगा, 9 दिसंबर को दस्तखत कर दूँगा, जो बोला कि 100 दिन में 6 गारंटी फुलफ़िल कर दूँगा, आज 1 गारंटी तक ठीक से फुलफ़िल नहीं किया। अगर ये आदमी दूसरे को अगर गोबेल्स बुलाएगा
तो शायद गोबल्स भी अपने ग्रेव में थोड़ा अनकंफर्टेबली शिफ्ट हो जाएगा. Why didn't people react? I mean, your father was instrumental in creation of the state. Yes, you lost the election, but I've seen this among the people. There is this deep sense of understanding, respect that he created the state. Some, of course, attribute that Sonia ji created the state, but there's a deep sense of respect for your father. Why is it that when he makes these personal attacks on your father, there isn't a blowback? What do you want us to do? Go attack him physically? Not you. I'm saying among the people. Among the people only. What do you want us to do? Go and attack him physically, or throw chappal at him, throw spell stones and eggs at him? What do you want us to do? The thing is, the best way to answer such nonsense is by way of votes. And I think that's exactly what's going to happen in parliament elections in Telangana. Like you said, did the tide turn? You will have to wait till June 4th, but I am quite confident that the tide did indeed turn, and that you will see anger being unleashed against the Congress government in Telangana on the 13th of May. Why did the tide turn against your party? Well, Smita ji, you have to remember one thing. You must have done some kind of chintan manthan. हाँ, बिल्कुल. जब भी कोई electoral loss टाइम होता मिलता है ना, तो टाइम तो मिलता है इलेक्शन हारने के बाद. तो हुआ ये है कि नहीं, but not everybody does it. Let me tell you, not everybody does it. People tend to blame people. That I think that's the last thing a politician or a normal sane individual should do, because हम में अगर कमियां हैं, अगर हमने गलतियां की, हमने अगर कोई कमजोरियां हैं, उनको सुधारना ज़िंदगी है. I mean, unless you understand that you must have done something wrong for the people, or you must have done something which is not good enough to enthuse people to come and vote for you. That's why you lost. So I completely accept, and we completely accept, that the fact that we lost a third election in Telangana, we won 2 prior, we've been given 10 years of governance, opportunity at governments. We're eternally grateful to the people of Telangana for giving us 2 terms. मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, I'm not trying to sound philosophical or anything, but हमारी पार्टी बनी थी तेलंगाना राज हासिल करने के लिए. मकसद वही था. हमारे मतलब दिल में यही था कि बस तेलंगाना बने, उसके बाद कुछ भी हो जाए काफ़ी है. मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट है, आपके पास भी वक्त है, मेरे पास भी है, कोई चिल्ला नहीं रहा आपके खान में, तो इसलिए कह रहा हूँ. I don't have that. तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 2014 में जब राज बनी थी, KCR जी ने प्रॉमिस किया था सोनिया जी को, हम मर्ज कर देंगे हमारी पार्टी कांग्रेस में. तो उस दिन हम तैयार थे पूरी तरह से कि मर्ज कर देंगे. और मैं कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूँ बचपन से. आई डू नॉट लाइक दैट पार्टी. आई हैव a strong dislike, very strong dislike, because I was raised in an anti-Congress environment. My father was all along in TDP, the Telugu Desam Party, and I believe that Congress इस देश में जो भी गलतियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, इसका जड़ कांग्रेस है, इसका रूट कॉज कांग्रेस है. ये मेरी पर्सनल बिलीफ है. तो जब बात हो रही थी पार्टी मर्जर की कांग्रेस में, आई टोल्ड माई वाइफ, आई टोल्ड ऑल माई फ्रेंड्स कि मैं छोड़ रहा हूँ पॉलिटिक्स, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आई कांट सी माई सेल्फ इन कांग्रेस एंड आई कांट सी this state also doing very well under them, but it's a decision boss has made, so I'm quitting. Which was, in fact, my wife welcomed it. She said, great, you quit. जिस दिन हम लोग सोनिया जी के घर गए थे उनको थैंक्स बोलने, पूरा तय हो चुका था कि हम लोग पार्टी मर्ज कर रहे हैं. मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ, ठीक है, अल्टीमेटली वो हुआ नहीं, क्योंकि दैट हैंडलिंग वाज नॉट डन प्रॉपर्ली. कांग्रेस, हाई हैंडेडनेस एंड एरोगेंस वंस अगेन काइंड ऑफ शॉट देम इन द फुट. कि खुश नसीब है हम कि वो हुआ नहीं. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पार्टी जो What were the terms and conditions, if you can tell I'll me? come to that in a second. But the point I'm trying to make is, हम खुश नसीब हैं इसलिए जो पार्टी 2014 में मतलब गायब होने वाली थी कांग्रेस में मिलके, 15 साल बाद आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं. 10 साल हमें गवर्नमेंट में मौका मिला, मतलब 10 साल के बाद हम बात कर रहे हैं. 10 साल गवर्नमेंट में हमें मौका दिया, तेलंगाना जनता ने प्रेम दिया. आज 10 साल बाद अगर मैं उनके बारे में कुछ गलत कहूँ कि हमने तीसरी बार मौका नहीं मिला इसलिए आपने गलती किया, ये बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी हो जाएगी. इसलिए मैं कहता हूँ, हमने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि KCR जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मैं उनके कैबिनेट में रहूँगा. तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात हो गई कि जो मौका कभी ज़िंदगी में चाहा नहीं, कभी सपना भी नहीं देखा किसी का, तो आज वो साकार हो गया और तेलंगाना भी बन गया, साथ ही साथ 10 साल कंट्रीब्यूट करने का एक मौका भी मिला. तो इससे बढ़ के अगर कुछ चाहूँ मैं, ये ग्रीड हो जाएगी. तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, सी वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. वी हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स विदाउट अ क्वेश्चन, वरना पीपल व्हाई विल दे थ्रो यू आउट. सो इवन दो वी लॉस्ट, स्मिता जी, वी डिड नॉट फेस अ राउट. Out of 119,
We have been given 39 seats, which is 1/3 of the total house. And 14 seats we lost by a whisker. 14 seats. The Congress also, the simple majority is 60. They won 64. It's not like they had a record majority or anything. So the fact is, we have made some mistakes. We have to rectify them and go back. Now, going back to your question, कि क्या टर्म्स कंडीशंस थे, बस टर्म कंडीशन यही था कि 14 साल हमने बहुत लड़ाई की हमारी पार्टी ने तेलंगाना हासिल करने के लिए, काफ़ी सैक्रिफाइसेस हमारे लीडर्स ने की. तो हमने बस उनसे यही पूछा कि आप ये बता दें कि तेलंगाना में जो 119 सीट है, इनमें से कितने सीट आप हमारे लीडरों को देंगे, क्योंकि इन्होंने 14 साल बिताया हमारे साथ और काफ़ी मुश्किलात फेस किए. वी फॉट 3 गवर्नमेंट्स. So we said, please make sure, because these people who are with us, and if the energy has to also transform, and if it has to, the merger has to really yield any dividend, then this has to be clearly spelled out. Congress was not willing to spell out anything. They said, please, aa jao, line mein lag jao, dekhenge phir baad mein. Like I said, the high-handedness, the arrogance, the sense of entitlement, ki hum hi hain, that is what has costed them dear. That is what has costed them a leader like KCR. And strangely enough, many feel, and pardon me for saying this, that it's the high-handedness or the aloofness of KCR which people said that he's just not available for us. प्रॉब्लम ये है इस देश में कि अगर आपकी परफॉर्मेंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, अगर आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अगर कोई उसमें कोई चैलेंज करने वाली बात अगर नहीं है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनी थी तेलंगाना में, वी वर रीलिंग अंडर अ सीवियर पावर शॉर्टेज. 7,700 megawatts was the installed capacity in Telangana. We have risen it by 4 times almost. Now it's about 25,000 megawatts. This was a state whose per capita income was 1,24,000. We have risen it, and now today it's 3,57,000 rupees, which is the highest for any state in India. Our green cover has grown by 7.7%. 5 lakh acres of new forest has been added. We have given, some tremendous initiatives for this country. Raitu Bandhu, which is a unique initiative launched by KCR Garu, direct farmer, assistance, inspired PM Kisan. We launched it in 2016 in Telangana. We have delivered 70,000 crores of rupees to 70 lakh farmers. First of its kind initiative in independent India. We are the first state to complete a portable drinking water connection to each and every home under a project called Mission Bhagirath, which inspired Har Ghar Jal. I can go on, the list is endless. So then why? So इसमें ये होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस को कोई कंटेस्ट नहीं कर पाता है, जब आपकी डेवलपमेंट एजेंडा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, दे विल ब्रिंग इन ऑल अदर इश्यूज टू द फोर कि KCR टायरेंट है, KCR अलूफ है, KCR इनएक्सेसिबल है. मैं पूछना चाहता हूँ स्मिता जी, एक कोई राज्य में चीफ मिनिस्टर से पर्सनली मिलने की ज़रूरत कितने लोगों को पड़ती है पूरे पॉपुलेशन में? 1% or less than that? But to make it look like 100% people were trying to meet him and he was not available. When he was doing larger things, he built the world's largest lift irrigation project. Did you know that the world's largest lift irrigation project existed in India? It's a matter of pride. Unfortunately, ना मन की बात में इसकी प्रस्ताव होती है, ना कहीं प्रस्ताव होती है, क्योंकि ये नॉन बीजेपी स्टेट है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये सारे अचीवमेंट्स को अगर नीचा करके दिखाना है तो बाकी चीज़ ला लो स्टेज पे और बोलो कि KCR टायरेंट है, KCR मिलते नहीं, KCR एरोगेंट है, ये है वो है. ये बाकी जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक साजिश जो रची गई, काफ़ी हद तक हमारे ओपोनेंट सक्सेसफुल, इसीलिए हम लोग 1.8% एक थिन मार्जिन से हार गए. Is it possible, and I go back to this one debate where I was, a TV debate where I was there, and it was that event in Patna which had happened where your dad had gone there, and the whole name change issue was discussed where it became from TRS to BRS. And at that time I said he's shooting way above his weight. He's hitting way above his weight. And he was with Nitish, he was speaking in that colloquial Hindi, with Urdu, and he was connecting. So was that the issue that happened at that time where people in Telangana felt that, KCR ji is not going to be in Telangana, he's going to be moving closer to the India Alliance, though at that time you people said, we don't want to be part of the India Alliance, you wanted to make that Federal Front, or the name that you guys were thinking about. So was it that they felt that he's got different ambitions now? I mean, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे
जब एक पार्टी अगर 40 साल में 2 सीट से अगर 303 सीट तक आ सकती है, बीजेपी जैसी पार्टी, क्या दूसरों का वही एम्बिशन रखना या उभर के आने की एक सपना देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक मूवी आई थी, मैं जब कॉलेज में था, खामोशी शायद उसका नाम था, नाना पाटेकर साहब और मनीषा कोइराला जी थे उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, व्हाट्स लाइफ विदाउट एन इम्पॉसिबल ड्रीम. बीइंग ड्रीमर इज not wrong. Wanting to make an impact is not wrong. Wanting to expand your horizons is definitely not wrong. So when Telangana Rashtra Samiti, which had done exceedingly well in Telangana, in terms of setting new benchmarks, creating some truly majestic projects for the state, if we wanted to expand this model and replicate it, in other parts of the country, I don't think there was anything wrong with it. If a Gujarat model, which was supposedly the best in the country back then, if that could become, the kind of platform from which Narendra Modi ji could become the Prime Minister, our Chief Minister also wanted to, try his luck in national politics and, basically aim, at other states. Nothing wrong in that. Did we lose our home base in the bargain? Maybe yes, to an extent, but I don't think that's the singular reason. Let me get to the other issue. One was the allegation about inaccessibility, which you say isn't true. The second is the view that about the corruption, the liquor scam, in which your sister is still in jail. She's not got bail as yet. So that was the other issue. What do you have to say about that? Well, firstly, it's not a scam, is what I would say, because if the excise policy of the government of Delhi was to be challenged, and if that were to be shown as a scam, let me ask you a couple of questions. One, how many policies has the government of India tweaked to suit some individuals? Let me name a couple. The coal import policy, who was it done for? I think we all know the answer. Mr. Adani, Mr. Gautam Adani. Who was the airport policy tweaked for? Mr. Gautam Adani. So my point is, if a cabinet decision on a policy relating to a specific matter, be it civil aviation or coal import or excise, if there is an allegation that a policy has been tweaked to suit a few, and there were some kickbacks, apparently, none of which has been found, it's all a figment of imagination, is what I would like to say. The fact today is, in this country, weaponizing of institutions has become the norm. मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और आपके ज़रिए आवाम से भी, जनता से भी, मैं हमारे भाइयों से, बहनों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब कोई आरोपी, जिन पे आरोप लगते हैं, वो जाके बीजेपी में या बीजेपी के अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो पूरे के पूरे दूध के दुलेवे हो जाते हैं. जैसे अजीत पवार जी, फडणवीस जी कह रहे थे कि अजीत पवार जी ज़्यादा दिन नहीं, ये चक्की फिशिंग कर रहे थे. मोदी जी स्वयं जाके कहते हैं महाराष्ट्र में कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ. आज फडणवीस जी की सतीमणि को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्लीन चिट दे देती हैं सुनेत्रा पवार को, और कार्रवाई बंद हो जाती है. एक नहीं, दो नहीं, 25 से ज़्यादा लीडर आज जो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं उन पे कोई नहीं होता. और जबकि बात आती है लिकर पॉलिसी की, लिकर पॉलिसी में अगर आज तक कहीं 1 रुपया बरामद हुआ तो मुझे बता दें. 2 साल से कार्रवाई चल रही है, काफ़ी सारे लोग जेल में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल, कविता जी, सिसोदिया एंड अदर्स. ना 1 रुपया बरामद हुआ, ना 1 रुपया ईडी पकड़ पाई. इट्स ऑल ही सेड शी सेड. और सबसे अजीब बात यह है स्मिता जी, 2 लोग जो अप्रूवर बन जाते हैं, एक आदमी आज एनडीए का कैंडिडेट बन जाता है आंध्र प्रदेश में और मोदी जी उनके लिए कैंपेन करेंगे, इसमें कोई क्विड प्रो क्वो नहीं दिखता आपको. और दूसरी बात, एक और आदमी जिसको बेल मिलता है, अप्रूवर बन जाता है, वो 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देता है बेल मिलते ही. तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल स्कैम पकड़ो ना यार. एक्चुअल स्कैम कहाँ हो रहा है? अदानी जी की कोल इंपोर्ट में हो रहा है. मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कोल इंडिया जैसी कंपनी है, सिंगरेनी जैसी कंपनी है, इस देश में 120 साल तक हमें कोई किसी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं कोल. क्यों हम लोग आज कोल इंपोर्ट करने के लिए दबाव डाल रहे हैं? क्यों जब श्रीलंका गवर्नमेंट कहती है कि मोदी जी ने हमें आर्म ट्विस्ट किया कि आप 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अदानी जी को दे दो, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसमें कोई स्कैम क्यों नहीं दिखती किसी को? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्टिव थिंकिंग, सिलेक्टिव ट्रायल बाय मीडिया कि स्कैम है. स्कैम हम कैसे घोषित करें? अभी अगर ईडी कहती है स्कैम है, आरोप है. So what was your sister doing then with the liquor thing? Why was she taking contracts in Delhi? Says who? Then
Says who? Then why is she there? Why is the court Because not Enforcement Directorate has this draconian power to arrest anybody. Tomorrow they can pick you up and put you in a jail because somebody has said Smita Prakash is involved in this. Even though not a single rupee has been found on you, there is no direct link or whatever, they can still put you in a jail. Why is she That's not the- getting bail then? That's what I'm saying. This country, whether you would like to believe it or not, whether we would like to speak in hushed tones or not, we all know how this country's institutions today have been So why under did a they get stranglehold of one individual, that is what Narendra kind Modi. of pressure? If you are alleging that it was pressure and victimization that they were doing, what were they? What did they want from you? Well, weaponization of institutions. I can give you hundreds of examples in this country. मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, एक ही सवाल. आप मुझे 10 साल में एक बीजेपी लीडर या एक बीजेपी के सदस्य पे अगर कहीं ईडी का रेड हो या अगर कहीं किसी को सीबीआई ने पकड़ा हो या आईटी का रेड हो, आप मुझे दिखा दें और मुझे बता दें कि इन्होंने इम्पार्शली एक्ट किया. 10 साल में हर ऑपोजिशन लीडर पे रेड होती है, चाहे आप स्टालिन से लेके केसीआर से लेके केजरीवाल से लेके ममता से लेके हर किसी ऑपोजिशन लीडर को इंस्टीट्यूशंस को वेपनाइज करके उन पे हमला होता है. ये देश आज डबल इंजन पे चल रहा है स्मिता जी. मालूम है डबल इंजन क्या है? या तो हमला या जुमला. या जुमले से चला लो, जुमला अगर काम नहीं करता तो हमला करो. So what did they want? Again, I'm repeating. What did they want out of you? Why did they pick up? If you are saying that Kavita ji is totally innocent, then why did they pick her up? What was the quid pro quo? What did they want out of you? Well, I think that's for BJP to answer, but I can tell you one thing for sure. In this country, wherever they want to scare and arm twist a strong regional leader, this is not the first time they've done it. This is not the last time they'll be doing it, if given power again. So the country needs to think. They have done it against every single opposition party. Today, they're two So is chief- the judiciary also hand in glove? Well, all I'm saying is every single institution in the country today. You have no faith in it? Unfortunately. No, I have a lot of faith in judiciary. I think that's the last institution which is really like you know that movie that you saw, Last of the Mohicans. उसे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में आज अगर कहीं एक जगह इंसाफ की अगर कोई उम्मीद है तो जुडिशरी में ही और कहीं नहीं है. You know, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन को वेपनाइज कर दिया. मुझे एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, अगर इंस्टीट्यूशंस पार्शियल नहीं है, बायस नहीं है, जब मोदी जी कहते हैं कि डायरेक्टली नाम लेके कैंपेन करते हैं, ही इन्वोक्स रिलीजन इन हिज स्पीचेस, अमित शाह जी होल्ड्स राम जी का फोटो एंड कैंपेन्स, अरुण गोविल जी कैंपेन्स विथ श्री रामचंद्र जी's photo. Is this not against model code of conduct? Are they? How come they are not being treated the same way as every other opposition leader is being treated? Are the institutions in this country fair and free? Is the Election Commission of India not acting under duress? You tell me. It's unfortunate, truly, the kind of subjugation that we've seen in India and the stranglehold that this one man and his party has on every single institutions. It's truly, truly, truly unfathomable. So are you seeing 2024 as an unfair election? Oh, absolutely. Absolutely. In fact, we live in a country where a Supreme Court Chief Justice retires and immediately becomes, BJP's Rajya Sabha member. Yeah, what more do I say about this judgments he has given in the last 6 months or 1 year prior to that? So why are you fighting it then? If this election is 2024 is unfair and you It is know that it's absolutely then unfair, but it is our job to tell the people. We can't just throw in the towel and say, Modi ji, आप ले लो गद्दी और हम लोग यहाँ खामोश बैठेंगे. लोगों को तो बताना पड़ेगा. Okay, earlier you were talking about regional parties and you felt that they are the future for democracy of this country, not the Congress party. But if you see the regional parties, they've become totally family oriented and nothing beyond. If you see JDS, the 3 seats that they got, 3.5 or 4 seats now, because one is a brother-in-law who's fighting under the BJP. They're all members of the same family. You talk about, you go north, I'll just take a few. You go to the Samajwadi Party, all the Yadavs that they've given tickets to, all the Yadavs are only from Akhilesh Yadav's What about family. Parivarwad in BJP? So I'm just asking you, before coming to the BJP, I'm coming to you also, that there are many who feel now even your party is either your dad, you or your sister, and that's about it. So where is it that the younger generation in the regional parties, or if you see Stalin, they can never come to be at the pinnacle of the party? See, I'll tell you one thing. First, let me address the whole dynasty. Leave the BJP aside. No, I'm not even talking I'm about just the BJP. talking about I'm the not talking regional about the because you BJP. spoke regional. I'm not talking about the BJP. I'm not talking about the BJP. I'll come to it later.
in politics, in public life, being somebody's son or daughter should not become your only eligibility to run for office. But at the same time, it should not become an impediment also to run for office. I won 5 elections on the trot now. So would you say that the people who elected me are not wise enough? Modi ji also has won several elections. The same people who voted for Modi ji, same Indians, also voted for me, even though I'm KCR's son. Maybe the first election it served as an entry pass for me. But beyond the first election, don't you think it is my own merits, my own performance which matters? अगर मैं कोई काम का नहीं हूँ, अगर आप एक मिनट के लिए सोचेंगे, स्मिता जी, जब मौका मिलता है कोई एक अभिनेता को उनके बच्चों को लॉन्च करने की, अगर वो अभिनेता के बच्चों में दम नहीं है, अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो गायब हो जाते हैं, सेम लेवल ऑफ सक्सेस नहीं मिलता है. आप याद रखिए, सेम चीज़ अप्लाइज टू, सेम थिंग अप्लाइज, सेम लॉजिक अप्लाइज टू इवन पॉलिटिशियंस. देयर आर सेवरल daughters and sons and dynasty kids who didn't do well. My point is, people are wise enough. I think it is, let us leave it to the Indians to judge कि कौन काबिल है कौन नहीं. Just because you are somebody's son, to say that किसी और को एंट्री नहीं मिल रहा, ये कहाँ की बात है. अगर मैं अपने बल में अपने आप को प्रूव कर लिया हूँ और मैं जीत रहा हूँ इलेक्शन 5-6, तो इसमें भी आपको अगर गलतियाँ नजर आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. पहली बात. दूसरी बात, जब जेडीएस बीजेपी के साथ अलाइन हो जाती है उनको कोई तकलीफ नहीं लगती कि नेपो है, नेपोटिज्म है, हेरिडिटरी है. जब टीडीपी अलाइन हो जाती है बीजेपी के साथ कोई तकलीफ नहीं. जब शिवसेना उनके साथ जब तक है कोई तकलीफ नहीं. जब अलग हो जाते हैं उनसे तब बोलते हैं कि ये तो परिवारवाद है. ये कहाँ की रीत है? या तो एक फिलॉसफी ले लो. और दूसरी बात, आज कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जहाँ परिवारवाद नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? वेद प्रकाश गोयल जी के लड़के आज नहीं लड़ रहे हैं क्या इलेक्शन? पीयूष गोयल जी, कौन सी ऐसी पार्टी? मुझे बता दीजिए. मैं बीजेपी में मैं गिनवा सकता हूँ 20-25 नाम. I'm not talking about BJP's allegation. I'm saying that most Indians feel now. No, I don't think most Indians feel that way. That whether you're talking about Congress, if most Indians feel that way, then they would not be electing all these leaders that you just mentioned. What is a choice? You tell me. What do you mean? What is a choice? Anybody who stands against me, if I am so incapable, if I am so incompetent, I won against both BJP and Congress. If I don't want the BJP and I don't want the Congress, then I have to settle for a regional party, and all regional parties, if you leave aside the TMC, is led by family-run organizations. We can't be selective, Smita ji. We can't change the narrative. We can't change the narrative to suit our needs. Like I was telling you just a while ago. Why can't I change it? I'm asking you. नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हमने लोगों को एंथ्यूज करने में हमारी नाकामयाबी रही, इस वास्ते हम इलेक्शन हार गए, तो हमें ये भी मानना होगा कि मेरे खिलाफ जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार थे, they were not able to inspire confidence among the people. So therefore they lost. If the BRS wins and has a prime minister candidate, it will be KCR or KCR's son. If the Samajwadi Party, what is wrong in that exactly? So I'm just, if people are accepting that, what is wrong in that? What I'm saying is that if the Samajwadi Party comes in a coalition, it will be Akhilesh or Akhilesh's wife. It will be Sukhbir Badal or Harsimrat Badal. It will be Farooq Abdullah or Omar Abdullah. The only thing is that out of the BJP, none of them, whether it is Rajnath Singh, whether it is Modi, whether it is Amit Shah, talk about the top Yogi, none of them come from political families on the first 5-6. Nitin Gadkari, any of them. How does that matter? If they are a non-performing government after 10 years, if they have done diddly squat for the country in spite of being non-dynastic, so how does it matter? Their performance is poor. मुझे आप बता दें 10 साल में बीजेपी की क्या ऐसी परफॉर्मेंस है जिसको देख के even the Congress, even though it's a dynasty-run party, in spite of that, if there is a prime minister candidate from the Congress party, it may not be a Rahul Gandhi. It could be a Kharge. But from regional parties, it's only going to be Udaynidhi Stalin or Stalin. It's only what is wrong in that? What is wrong in that? Why do you think that is wrong? First thing. Secondly, if a Jay Shah, the greatest cricketer of India has produced, can become BCCI's virtual boss for all practical reasons, just because he's Amit Shah's son, that's not Parivarwad. I am talking simply right now because we are in election mode, and you are saying that it could be a coalition. It need not be the BJP. All I'm saying is, if it's a coalition, it's going to be all these guys, and all of them are
sons of so and what so, is wrong not in even that? a daughter. मोदी जी not भी a किसी के single- लड़के हैं, मोदी जी भी किसी के बेटे थे, अमित शाह जी भी किसी के बेटे हैं। मैं एक बात कहना चाहता जो हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं है। तो क्या हुआ, फर्क क्या पड़ता है? अगर आप बेकार हो, अगर आप बेकार हो, नॉन परफॉर्मर हो, बेकार हो, लोग अगर आपको निकाल फेंकेंगे तो तकलीफ क्या है उस बात में? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 10 साल के बाद एक गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैट्रिक्स बताओ कि हमने किया क्या, उखाड़ क्या लिया, 20 करोड़ कहाँ, तुम्हारी रोजगार कहाँ गई, इकोनॉमी को कहाँ तक लाए, 5 ट्रिलियन की बकवास बहुत कर रहे थे। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, जब आप नॉन परफॉर्मर हो, अब क्या करोगे? रेटोरिक लाओगे, डायनेस्टी, नेपोटिज्म, परिवारवाद, करप्शन, जबकि आप दुनिया के सबसे बड़े करप्ट प्राइम मिनिस्टर हो। मोदी इज द मोस्ट इनेप्ट, मोस्ट करप्ट, मोस्ट इनएफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर of independent India in 76 And yet years. he won 2 terms. Because of communalism and nationalism, it's a deadly cocktail. So the voter is to blame for electing? No, absolutely not. It is the BJP that has to be blamed. No, but he's Because won an election. That's what so I'm what saying. you are saying if is winning elections is the criteria, then I've won 5 elections. Then why would you say, मेरे यहाँ ये परिवारवाद बन जाता है जब मोदी जीतते हैं 2-3 इलेक्शन, वहाँ पे तो लीडर बड़े महान हैं। ये कहाँ की रीत है? आप जीते विद अंडर द छत्र छाया ऑफ योर फादर ना? First election is something that I won under the chhatra chaya of my father. But my father, my leader, has also made sure 88 other people also have won, not just me. But and I won he's 5 this elections. overpowering influence in your party, yes or no? Who's the overpowering influence in BJP? JP Nadda, according to you. कठपुतली है, कौन नहीं जानता है? हर पार्टी में एक ही लीडर होता है। बीजेपी में मोदी, कांग्रेस में सोनिया जी, बीआरएस में केसीआर। इसमें क्या छुपाने वाली क्या बात है? हिपोक्रेसी क्यों? अगर कोई और लीडर को बना भी दिए, नड्डा को बना दिए, खारगे को बना दिए, कठपुतली है, सब जानते हैं। Is he grooming you to take No, over? absolutely not. He's a strong man. Even at the age of 70, he's running around, he's fighting it out in the sweltering heat, and he needs nobody to kind of compliment him. He's a very, very self-sufficient man, and all I'm saying is the selective niti when it comes to judging leaders. Just because KCR's kids are in politics, he's bad. Just because Modi doesn't have a family, he's great. What kind of logic is this? Kisko pata? We are not talking about Modi's parivar or lack of it. That's not an election issue. That's nonsense. Can we not talk about Yashoda Benji? Should we talk about Har Mangal Sutra? Is that an election issue? It's not. The 10 ministers of prime ministership and his ineptness. Let's talk about that. क्या उखाड़ लिया बताओ यार 10 साल में कि आपको वोट दें फिर से? मोदी नहीं तो कौन? क्यों नहीं? मोदी नहीं तो काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत केपेबल लोग हैं, बहुत सारे काबिल लोग पर हैं। एक भी नाम नहीं आता है। बिल्कुल आता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। That's why India Alliance has not come up with a name, प्रॉब्लम no? इज मोदीज बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज राहुल गांधी। आपको खुशी मिलती है, आपको मतलब आपको नहीं, बीजेपी को खुशी मिलती है कि मोदी और राहुल दिखा दें तो मोदी अच्छा लगेंगे, सुंदर लगेंगे, और उनके लिए वो नैरेटिव सूट करता है। इसीलिए बार बार कांग्रेस को जैक उठा के लगाने के ऊपर बढ़ाने की कोशिश मोदी करते हैं, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि सबसे बड़े कार्यकर्ता है अगर कांग्रेस के, बीजेपी के अगर कोई, तो राहुल गांधी है। तो कौन होना चाहिए फिर? क्या चीज़? If not Constitution Rahul of Gandhi. India will decide who the next prime minister should be. It's a parliamentary democracy. 272 जो पार करेगा, जो अलायंस पार करेगी, जो कोई पार्टीज कोalition पोस्ट पोल पार करेगी, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा। उसमें क्या है? मोदी नहीं तो कौन, कोई और आएगा। Right. Let's come back to Telangana. One election from your state which is grabbing a lot of media attention is Owaisi versus Madhvi Lata. It's a foregone conclusion. Owaisi is winning without a question. You don't have to think about it also. She's making a complete joke of herself and a caricature of herself. What nonsense is that? So what I would think is that that election is a foregone conclusion, especially with this sort of comedian running from BJP. I think it's just a foregone conclusion. Why are you using such strong words? Because she is a comedian. I mean, talk to anybody on the ground, you'll know the same thing. I mean, she's just making a complete fool of herself. She talks about... Election is about serious issues. Election is not about shooting arrows or dancing in the streets and making a complete joke of yourself. These elections are serious issues. Let her talk about inflation. Let her talk about jobs. Let her talk about what Modi has delivered for this country or Hyderabad. When Hyderabad was reeling under floods, did the BJP give a single rupee? Did the BJP give a single institution to Telangana in the last 10 years? एक medical college, एक नवोदया school, एक IIM, एक IIFT. 10 साल से हम मांग रहे हैं। डिफेंस लैंड्स नहीं दिए, एक पैसा नहीं दिया। अब उस आदमी को क्यों वोट देंगे? क्योंकि रिलीजन है, हिंदुत्व है, जय श्री राम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जय श्री राम, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, आपने थोड़ी बनाया। और राम हर किसी का देव है यार, हर किसी का भगवान है। राम जी ने ये नहीं कहा कि
आप जो राजधर्म नहीं निभाते उनको वोट दो। राजधर्म क्या चीज़ है? आपके हर किसी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, तो हर किसी को जात के नाम पे या हर कोई दूसरे नाम पे पोलराइज करके ना देखो, हर किसी को एक ही तरह देखो। जो आदमी वो काम नहीं कर पाता, उसको क्यों वोट दें? जब राजधर्म की बात आ रही, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन दैट हैपेंड ड्यूरिंग योर टेन्योर व्हेन यू वर इन अ मिनिस्टर in your government. At that time, where was the Rajdharma and people's phones were being tapped? That was an accusation made against your government. Accusations are made plenty. They can fly thick and fast. Where is the proof for that? Who says phones were being tapped? Did the government come out and say it? Now I can tell you, I have received an alert on my own phone from Apple कि आपका फ़ोन टैप कर रहे हैं मोदी जी Pegasus यूज़ करके। तो मैं किसको जाके बताऊँ? My point is, Pegasus and all the softwares and all the techniques that are used by the spying agencies, let there be an open debate. Let the government come out and say who's done it and what happened. All the nonsense that gets propagated in YouTubes and social media. स्मिता, actually honestly मैं कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया तो एंटी सोशल मीडिया बन गया अभी। मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है उसमें, अब जाने में कभी का एक बार घबराहट हो जाती है। क्या क्या बकवास, कुछ भी बोलते हैं कि मैंने किसी हीरोइन का फ़ोन टैप किया, किसी को डराया, किसी को धमकाया। क्या बकवास। I said on live television, I'm saying it again on your podcast, I am ready to take a lie detector test, open, on air live karo. Let Revant and Kishan also come, because both of them have been saying nasty things. Let them both come, let 3 of us take a lie detector test. मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी जी को, आज मेरा फ़ोन और उनके जो मिनिस्ट्री में साथियाँ हैं, उनके फ़ोन वो टैप नहीं कर रहे हैं, क्या बता दें? They're tapping your phone? 100%। अरे क्या, अब क्या मतलब, इतने साल से आप जर्नलिज्म में हो, आप जानती हो ठीक तरह से कि आज इनसिक्योर लीडर्स जो होते हैं, जैसे रेवंत रेड्डी है, जैसे मोदी जी हैं, हर किसी के निजी ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं। हम इतने इनसिक्योर नहीं हैं, ना थे ना रहेंगे। जैसा मैंने कहा, 10 साल हमें मौका मिला, बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश है, और आगे जाके मौका मिले, विल फाइट फॉर प्राइड, बिकॉज दिस इज अ स्टेट वी फॉट हार्ड टू क्रिएट। We'll fight again. You know, when you talked about toxicity of social media, I had your sister on my show, and we talked about toxicity, and she spoke about her nephew, your son, who was attacked on social media. Would you like to talk about it? Yeah. She spoke about it. The thing is, how did you deal with it as a family? No, it was horrendous. I mean, the kid, it was a teenager, a kid who was body shamed, and that too no less a person than the current chief minister himself, calling him names. I don't want to name those, and I don't want to indulge in that name calling again. It really puts you off, it really makes you question whether it's worth continuing in public life. Because अगर आपके बच्चों को इसमें घसीटा ला जा रहा है, और just because he's my son, he's been called nasty things, it really puts you off. It really makes you question whether this country and whether this, basically profession is worth it. But then you realize at a later point that, basically that's their strategy to put you off and maybe just to kind of take you off whatever chart that your course that you're charting for yourself. So all said and done, it has become very toxic, it has become very irritating, and the language that is used has become nasty. So yeah, your children didn't sign up for it, so how do you explain to them that these intimidation tactics are things that they have to deal with even if they are teenagers at that stage? जैसा शाहरुख खान कहता है बाजीगर में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खो के पाने वाले को बाजीगर कहते हैं, शायद वही ना डायलॉग। तो मैं उनको समझाता हूँ कि अगर फेम जो मिलती हैं इस प्रोफेशन में, और जो खुशी मिलती है पब्लिक सर्विस में, उसको अगर हासिल करना है तो ये बकवास भी झेलना पड़ेगा। दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन, अनफॉर्चुनेटली। आई हैव अपोलोजाइज्ड टू देम सेइंग, आई एम सॉरी दैट आई हैड टू ड्रैग यू इन टू दिस बिकॉज यू आर माई चिल्ड्रन, but such is the world. It's nasty. So how's Kavita ji's family dealing with? They're a resilient family. They're dealing with it okay, but it's tough. It's not easy. My mother mostly, and her young children, both, one is a minor, another is a major. All of them are going through a bit of a horrid time. So it's tough. I had asked her about how decisions are taken in the family. I'd asked her whether you all sit on the table and do you take it, or does your dad take decisions and then that's when how it comes to decided? family decisions, when it comes to personal matters, we sit as a family. But when it comes to the political party affairs, it is the party that takes a decision. It is not
a family running the show or a couple of people running the show. No. We have an extended state committee with almost 200 people, and we sit together, deliberate. A lot of times there are strong leaders who prevailed on KCRG, and he had decided on something, and then that had to be changed. He's a very democratic guy that way. He's a very democratic leader that way. Towards the end, I'd like to ask some, there's this saying which many of the opposition parties, non-BJP parties are saying, Dakshin mein saaf, Uttar mein half, about the BJP. In the sense of that, it's not going to, while the BJP wants to increase its footprint in South India, but the South party seem to be getting together to keep the BJP out. Are you part of that? No, kind of unsaid coalition to keep the BJP out? मैं उत्तर के बारे में तो कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, जानकारी भी ज़्यादा नहीं है उत्तर भारत में क्या हो रहा है. It's a different country altogether. If you ask me, it's a different world. Seriously, you're saying North is a different country? It's practically. I'm not saying literally, but it's practically a different country because the kind of issues that are center stage there versus the kind of issues that there are in the South are truly different. That's why BJP is not able to make inroads in the South. Definitely, I think the issues that matter here are different. The issues that really, people think about here are different. With, jobs, inflation, economy. Isn't that the same issues in the North? No, I don't think so. I think it's otherwise winning 75 seats out of 80, etc., is not possible because, think about it. Our per capita is 357, Telangana. I think Bihar is 57. I think UP is 87 or something. So yeah, I think it's a different country without a question. And I'm not trying to put down anybody. I'm not trying to say this arrogantly. All I'm saying is it's a fact. It's a different world out together. If you look at Telangana, look at Karnataka, look at Andhra Pradesh, look at Kerala, look at Tamil Nadu, the infrastructure here, the education levels here, the literacy levels, the healthcare parameters, look at any index. We are far ahead, of any other state, especially in the hinterland, in the Hindi hinterland. I'm not saying it's the fault of the people, not at all. It's the fault of the governments that they are not able to provide good administration. It's the fault of the chief ministers, their cabinets there, that their priorities are all in the wrong place. They seem to be content in keeping their people backward and just getting votes out of them by using primordial emotions. That's not the case here. We definitely focus on bigger issues, real issues. 19% of India, that is the south of India, contributes to 38% of India's economy. We punch double our weight. So that's the southern bloc for you, if I were to put it that way. I'm not saying it's a bad thing or a good thing. I'm not saying that, I'm not becrying or begrudging, somebody, kind of falling backward. हर घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें अगर कोई एक कमज़ोर बच्चा है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए. मैं उसमें कोई तकलीफ़ नहीं. बट तकलीफ़ इस बात का होता है स्मिता जी, जब तेलंगाना से हम ₹1 कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की इकोनॉमी के लिए, वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ इकोनॉमी, इवन दो वी आर द 12th लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज. तकलीफ़ इस बात की होती है कि ₹1 यहाँ से जब जाता है दिल्ली, हमें वापस मिलता है 46 पैसा. मैं ये नहीं कह रहा कि ₹1 मैं दूंगा तो ₹1 वापस दो, पर जब दिल्ली के बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे आते हैं, अमित शाह जी, निर्मला जी, मोदी जी, और ये कहने लगते हैं, लंबी लंबी भाषण गला फाड़ फाड़ के देने लगते हैं कि हमने आपके लिए ये किया वो किया, बहुत इंसल्ट फील होता है. वी आर अ कंट्रीब्यूटर टू दिस कंट्री, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशंस बिल्डिंग, नेशनल ग्रोथ. प्लीज एक्नॉलेज इट. जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अलाइंड विथ यू politically, don't put us down and don't put the people of Telangana down. That hurts. And my only point, limited point is, yes, the south of India, just one limited point on this, is tomorrow if we are going to lose out in terms of our voice in parliament, because the family planning happened here better, because government of India campaigned big time ki hum do hamare do, 80s में. You're talking about reorganization of states. Delimitation of Delimitation. seats. अगर कल साउथ के सीट अगर घटेंगे और नॉर्थ में अगर बढ़ेंगे, एक कतई मंजूर नहीं है. Okay, that's a larger thing which if we get into that, it's going to be a long... It's actually the most important thing if you ask me, because जिन्होंने देश के हित में काम नहीं किया, उनको अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे, उनकी आवाज़ बढ़ाओगे, हमें दबाओगे,
ये कैसे मंजूर होगा? तो यही कह रहा हूँ मैं, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, Yeah, इसलिए कह because रहा the हूँ. blueprint is still not out about how the delimitation No, I think if it exercise were is going to- BJP, then BJP will simply say कि जहाँ उनके सीट मिलने हैं, वोट मिलने हैं, वहीं बढ़ाओ. Okay, Simple है. finally, I have to ask you this, that in the first round and the second round, the voter turnout has been falling. Are you scared about it in Telangana that voter turnout being lower than last time will impact on your numbers? No, I don't think, the voter turnout really matters. I think who turn up and who vote really, I mean, ultimately अगर 100 लोग भी आके वोट करते हैं, उनमें से अगर 51 जिसको मिलता है वो बन जाता है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है. बट आई थिंक इट गोज़ बैक टू द क्वेश्चन आई वाज रेजिंग. इफ देयर वाज सच enthusiasm for one person or one party, I think the turnout would be larger. We still don't know I'm as not to saying anything. why they're coming out, because of course it's a time when everybody has to give a spin, right? So whereas there's one part of the BJP that is telling its voters that अरे कम लोग आए हैं, उनके लोग आए हैं, तो तुमको आना चाहिए. The other part of the BJP turns around and said that उनके committed voters नहीं आए हैं. So there's a spin which everybody is giving. I think we all have to 4th June तक ये चलते रहेंगी conspiracy theories, spin So doctors. does a low voter turnout turn to your advantage or disadvantage? No, I don't think it really matters because at the end of the day, like I said, no matter how many people show up, who show up for you matters. And I think you have to be confident in your own skin to think that, your people who support you will show up. All right. On that note, thank you very much Thank you, for Smita. spending time with us, especially during this hectic period of electioneering. Appreciate you coming to Hyderabad. Cheers. All the best. Thank you. Thanks. Thank you for watching or listening to the ANI podcast with Smita Prakash. To hit on the subscribe button, Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.